Good evening. Evening, ma'am. Good evening. A very good evening to everyone. So, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, first of all, I want to say that you are not coming to classes regularly, isn't? I Ma'am, I was want your coming. attendance. And Okay, ma'am. see, Samudra, I think you told me earlier that you need the PPT. Yes or not? Whatever I am Yes, ma'am. making, whatever I made, that one you need. Yes or not? Yes, ma'am. Yeah. So I'm telling you, whoever is whoever is present in the class, whoever will be present in the class, whoever will attend the class, only those persons, only those students I will give. Okay? Okay, ma'am. If you want from me, you please text me or you please WhatsApp me in my number. I will give you, definitely I will give you. If you want also, I will give you. Okay? Whoever wants, they have to attend the class. It's my request to you all. Yes, ma'am. Ma'am, your number is in the group. Yeah, it's there. Okay, ma'am. Okay? Personally you WhatsApp me and I will give you. Definitely I will give you. Okay? Fine? Okay, ma'am. Because those who are not attending the classes, I am really reluctant to give. Okay? Fine? Fine, ma'am. ठीक है चलो let's start today's class. So our new chapter is Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. Okay, I think you have an idea what is Employees Provident Fund. Yeah, suppose I am working in a company or I am working in an organization or I am working in a factory, okay? And after my retirement, I will get some benefit, I will get some fun from the from that company. From that company, how? I will save 1% to some person, okay, in a fund that is called Employees Provident Fund, and the employer will also share some amount to that fund. With that two sharing basis from the employer and the employee equally, or you can say the employer will give amount means definite amount, definite percentage, but if the employee wants to add more percentage, he or she can do that one. Okay, so we will start this one. And miscellaneous, what is called miscellaneous provision? Do you have any idea what is called miscellaneous provisions? What is the meaning of miscellaneous? Miscellaneous means the small or expenses which are not that important. Pardon? And miscellaneous are some other type of expenses or uh, means which are not that important that need to be recorded in the main accounts. No. Miscellaneous provisions. Miscellaneous provisions means It in all type of provisions. no, not like that. Means, just I am going to explain you. Suppose there is a fund, employees provident fund. From that fund you will get the benefit, okay? From that fund you will get the benefit related to that fund, related to that provision. Some other extra provisions are also there, from which you will get extra benefit also if you save your money there, okay? So that is called miscellaneous. Okay, extra means other than this, if you'll get some extra,
then that is called miscellaneous. Okay, fine? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so let me start. Employees Provident Fund and miscellaneous provisions, 1952. EPF and MP. You have understood this one? Employees Provident Fund and MP means miscellaneous provisions. Okay? This act has been enacted in the year of 1952. This act has been enacted in the year of 1952. Okay? Now, for what purpose this act has been enacted? For what purpose? For a social welfare legislation. Social welfare legislation means this is an act, this is a law based on social welfare. Means for the people of the society, for the benefit of the people of the society, this law has been made. Okay? It is applicable to whole of India. It is applicable to whole of India. To provide for the institution of Provident Fund, okay, Provident Fund, fine. Then Pension Fund and Deposit Linked Insurance Fund. For what purpose? To provide for the institution of, number one is Provident Fund, okay. Number two is pension fund, or you can say pension scheme also, and another one is deposit linked insurance fund. Insurance fund you have understood, I think, because suppose एक आदमी वो अगर during his tenure in the job अगर उसका death हो गया तो उसको जो after retirement जो benefit मिलना है तो उसको क्या होगा, वो तो उसका तो death हो गया ना, तो उसको मिलना था ना, that means PF amount और pension amount, तो क्या होगा, उसका जो nominees है, जो family members है, उनको मिलेगा. Okay, that is called insurance. It will help after the death. If the life will be there, then the fine. If life will not be there, then some other benefit will get to the will be available to the families of that person, of the employee. Okay. Now, number one, along with that, for providing social security benefits. This scheme, this act is required for providing social security benefits so that the employee and his family members get some security benefits for the welfare of the society, social needs, emotional needs, सबका है ना, तो वो फुलफिल करने के लिए, जैसे मैं रिटायर होने वाली हूँ, जब मैं रिटायर होने वाली हूँ तो मुझे क्या क्या काम करना है, आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, I have to run my family, because that time I will not be, means my everyday salary, every month salary, it will not be there. So there should be some saving account, there should be some saving. Okay. फिर क्या होता है, फिर बच्चों के शादी के लिए, for the marriage purpose of our kids, of our children. Then और क्या होता है, आपका बीमारी के लिए, for your sickness, you will get those benefits. So it is very important. This is very, very important. If you are working in an organization, if you are working in a company or anywhere, but you are getting PF amount, then it is very helpful to those people. But if there will be no PF, then it is very sad. It is very, very sad for those people who are not getting. Okay. For employees working in factories and other establishments. Okay. For timely monetary assistance to industrial employees and their families. ठीक है? अगर within that period of time, suppose a person became ill, okay, a person became ill
and he is not able to means he is not able to avail all the facilities for his illness, or he is not able to avail any monetary help from anyone, then this will help him. This will help him, and this will help his family members. Okay? Is it fine? Next one. Under this act, the Provident Fund, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, there are three schemes. Okay? Framed under this act. Who has framed these three schemes? The central government. Okay? It may come in your exam, suppose in MCQ, that who has framed those schemes, whether it has framed by the state government or the central government or any other authority. You have to say that it has been framed by the central government. Okay? Now, what are the three schemes? First one, Employees Provident Fund Schemes 1952. Employees Provident Fund Scheme 1952. First one. Second one, Employees Pension Scheme 1995. Employees Pension Scheme 1995. You should know the dates, okay? That regarding Employees Provident Fund Scheme, it is 1952, okay? And Employees Pension Scheme 1995, fine? And Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976. One is 52, one is 1995, another is, third one is 1976, fine? These three are very important. Now, the company which the company or the industries or the organization who can who fulfills these schemes, for the employees. This act is applicable to employees drawing pay not exceeding rupees 15,000 per month. Means the person should not exceed more than 15,000 per month. समझे? आपका सैलरी कितना होना पड़ेगा? 15,000 तक होना पड़ेगा. 15,000 से अगर ज्यादा होगा, then this act will not be applicable. अब आप पूछोगे मुझसे कि क्यों? बहुत सारा कंपनीज है, प्रोविडेंट फंड तो देते हैं, पीएफ तो देते हैं, पेंशन स्कीम भी है, तो वहां पे क्या होगा? वो उन लोग का सैलरी तो 15,000 से अबव है. नाउ ऐसा जहां जहां पे होता है, ऐसा जहां जहां पे स्कीम मतलब पीएफ और पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम जो भी है, जो भी फॉलो अप होता है कोई कंपनी में, वो कंपनी फॉलो अप करते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस. दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट or state government. They don't follow this act. Okay, fine? They have their own. Suppose in Oil India, we have pension schemes, we have this one provident fund schemes. All these are there, but they follow their own memorandum. They have their own memorandum, they have their own rules and regulations, and that is that is based on central government rules and regulations. Is it clear? Fine? Any doubt? Yes, ma'am. Okay. Now, it consists of this one. It consists of 4 schedules and 22 sections. Schedule 1, matters of industry engaged in manufacture. Okay? Manufacture, Schedule 1. Schedule 1 means what? Do you know what is schedule? Articles are there in the constitution. Okay, articles है constitution में, act में articles है, sections है. तो क्या होता है ना, कुछ चीज मतलब जो आप extra लिखा हुआ होता है, एक्स्ट्रा जो नोटेड होता है, वो कहाँ पे देता है? वो आर्टिकल्स में भी नहीं देता है, सेक्शंस में भी नहीं देता है, वो मेंशन करता है शेड्यूल्स में. ओके, द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन द शेड्यूल्स. फाइन?
Matters of industry engaged in manufacture, Schedule 1. Okay. Schedule 2, matters for which provisions may be made in a scheme. Okay, according to means we in a scheme what provisions they have to make, those things in Schedule 2. Schedule 3, matters for which provisions may be made in pension scheme. Schedule 3 क्या है? Pension scheme में क्या क्या provisions आना है? Okay, Schedule 4, matters to be provided for in the employees deposit linked insurance scheme. Insurance scheme में क्या क्या provisions रहेगा, बा क्या होना चाहिए? That one will be in Schedule 4. Fine. Shall I move? Next one. Now, this act is applicable where? This act is applicable for every establishment. For every establishment. Suppose in a factory, specified in Schedule 1. Okay? Schedule 1 में है factory. जहाँ पे मैंने manufacture का बात बोला है. Factory तभी बनता है ना? फैक्ट्री तो तभी बनता है जब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा. इफ देयर विल बी नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैन इट बी अ फैक्ट्री? नो, नॉट एट ऑल. ओके, सो फैक्ट्री इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 इन विच 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड. ठीक है, ये एक्ट तभी वहां पे अप्लाई होगा. कहां पे? जिस फैक्ट्री में 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, that one there this act will be applicable. Okay, next, to any other establishment employing 20 or more persons notified by central government in the official gazette. To any other establishment employing 20 or more persons notified by central government in the official gazette. अच्छा, जैसे फैक्ट्री के फैक्ट्री तो हो गया, शेड्यूल 1 में है. फैक्ट्री के बिना कोई दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स है, कोई भी दूसरा एस्टेब्लिशमेंट्स है जहां पे 20 और मोर वर्कर्स आर, मोर एम्प्लॉइज आर वर्किंग देयर. ओके, और वहां पे क्या ये जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है बा ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा. कैसे एप्लीकेबल होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा, नोटिफिकेशन देगा. ठीक है, जब एक एम्प्लॉयर भी सोचेगा, एम्प्लॉय भी सोचेगा कि नहीं मुझे ये स्कीम मिलना चाहिए, मुझे ये प्रोविजन मिलना चाहिए, आई शुड गेट, वी शुड गेट, तब वो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नोटिफिकेशन बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज यू प्रोवाइड दिस नोटिफिकेशन टू अस सो दैट वी कैन अवेल दीज प्रोविजन. ओके, फाइन. Next one, notice is given by central government to establishments where number of persons less than 20 as may be specified in notification for 2 months. Same thing, अगर कोई भी establishments में 20 से less हो और employer और employee में उन दोनों में ये decision होता है कि the employees should get those benefits, benefits from the central government according based on this act. तब वो क्या करेगा? फिर नोटिफिकेशन मांगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा दैट वी वांट दिस फैसिलिटीज. ओके, एंड इट शुड बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन फॉर 2 months. 2 months के नोटिफिकेशन में वो स्पेसिफाइड करना पड़ेगा. नॉट लेस देन 2 months, नॉट मोर देन 2 months. Once the act is covered to any establishment, it shall continue if number of people at any time falls below 20. अगर सपोज आज एक फैक्ट्री है बा कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे कोई 20 और मोर पीपल दे आर वर्किंग, ओके, एज एन एम्प्लॉय, लेकिन वहां पे तो ये एक्ट शुरू हो गया, एक्ट एप्लीकेबल हो गया क्योंकि वहां पे 20 और मोर पर्सन्स है. लेकिन सपोज 20 से कम हो जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है, और 8 आ जाता है, तो वहां पे क्या वो एप्लीकेबल रहेगा? दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल. यस, दिस एक्ट विल बी कंटिन्यूड. जैसे वो चल रहा है ऐसे चलते रहेगा. एक बार शुरू हो गया तो मानो शुरू हो गया, वो किसी का बात नहीं सुनता है. ठीक है, नाउ where it is not applicable, this act का जो एक्ट का एप्लीकेबिलिटी है, you came to know about this. Now where it is not applicable,
जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर एम्प्लॉइंग लेस देन 50 persons वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर. कोई एड ऑफ पावर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वहां पे 50% से नीचे काम कर रहा है, 50% से नीचे एम्प्लॉयड है, एंड इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके. Any other establishment controlled by central and state government whose employees are entitled to the benefit of contributory PF fund or old age pension scheme or rule framed by central government or state government. ये मैंने बोल दिया ना. I have told you that in case of Oil India, IOC, ONGC, GAIL, all these companies, they have their own rules and regulations, own memorandum based on the central government or state government. So they will not provide on the basis of this Provident Fund Act. Okay. Now apprentice is not covered under this act. अच्छा, apprentice जो बाहर से कोई मतलब कोई भी apprentice जो बाहर से है, जो that within that क्या बोलते हैं, within that establishment काम नहीं कर रहा है, within that establishment he is not working, okay, he is not a trainee, he or she will not get. Okay. Now, according to this Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, what is the appropriate government means? Appropriate government ही आता है generally. What do you mean by appropriate government? According to Section 2A. Section 2A of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. An establishment belonging to or under the control of central government or an establishment connected with, कोई भी establishment, appropriate government किसको बोलते हैं, जो कोई भी establishment जो किसके कंट्रोल में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और वो और नहीं तो कोई भी establishment जो connected है किसके साथ, a railway company, a major port, a mine or an oil field, a controlled industry, an establishment having department of branches in more than one state under the control of state government or central government. ठीक है, ये समझ में आ गया? This is very easy, just a read on. Ma'am, Yes, can you show the previous page? yes, definitely. Okay, ma'am. Yeah. Fine. Yes, ma'am. Now, basic wages. What we call basic wages, according to Section 2B of the Act, all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave or on holidays. कोई भी जैसे आपको सैलरी मिलता है, जैसे ऐसा होता है ना, हम लोग को अर्न लीव भी मिलते हैं कभी कभी, तो कोई भी सैलरी जो अर्न किया है एक एम्प्लॉय ने, कब, ड्यूटी में रहते हुए, he is performing his duty, while performing his duty, or on leave or on holidays, whatever salary he got, that is called basic wages. Okay. And that will not include the cash value of any consideration. Cash value of any consideration मतलब जैसे I am working in a company, ठीक है, मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, I am working there, and there one canteen is there. Okay, that canteen provides us always lunch and dinner, not dinner, lunch or snacks. Okay, fine. If they gives the suppose 200 rupees or 300 rupees, ऐसा है, 100 rupees ही है, जैसे एक थाली का, राइस थाली का कॉस्ट है 100 rupees, ठीक है, और वो 100 rupees में हम लोग को 50 rupees में कंसेशन दे रहा है, कंसिडरेट कर रहा है, तो वो नहीं इंक्लूड होगा. ओके, फाइन, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. ठीक है. Dearness allowance, you know dearness allowance, DA. House rent allowance,
overtime allowance, bonus and commission or any gift made by the employer. ठीक है, ये सब चीज इंक्लूड नहीं होगा किसमें, बेसिक वेजेस में. बेसिक वेजेस में सिर्फ बेसिक सैलरी जो आपको मिलता है कब, while performing your duty, while on leave or during holidays. Okay, any doubts, Samudra? No, ma'am. Okay, fine. Is it clear? Now, who is the employee according to section 2F? 2F of the Act. Any person other than an apprentice. Okay? Other than an apprentice means, I told you, no, apprentice means trainee. Okay? Any person other than an apprentice who is employed for wages, अपना सैलरी के लिए काम कर रहा है, in any kind of work, manual or otherwise, जो हाथ से machine work, manufacturing process कर रहा है, ठीक है, or any other work, employed by or through a contractor. ऐसा होता है कि contractor काम करा रहा है, अपना employees को contractor के through से वो काम कर रहा है, so that will be also included as an employee, ठीक है, but does not include apprentice. Okay, partners of firm having a status of beneficiary, any such person who holds a post under central government or state government. Is it clear? Any doubt? Rakhi, No, ma'am. Samudra, any doubt? Any No, doubt? ma'am. Fine. These chapters are basically easy, just concept आपको जान लेना है. You should know the concept. It's a concept based chapters, all these. The thing is that जो आपके बुक में जो explanation है वो थोड़े tough करके है, तो मैं उसको short करके बना दे रही हूँ. I'm making in a short way. The main points only I have taken. The Employees Provident Fund Scheme. First जो आपका scheme है, जो मैंने बोला था ना, 3 schemes were there. Yes or not? 3 schemes were there. So first scheme आपका क्या है? Employees Provident Fund Scheme. It is under section 5. Under section 5. Now, it has been framed by, this Employees Provident Fund Scheme has been framed by central government for establishment of PF, means Provident Fund for the employees. ठीक है? Okay? Now, it came into effect on 2nd September 1952. The enactment, this Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, it has been enacted in the year of 1952. But the Provident Fund Scheme, the scheme जो है Provident Fund Scheme, that came into effect on 2nd September 1952. Okay? It came into force when? 2nd September 1952. Fine? It is not applicable to tea factories in the state of Assam. This is very, very important. It generally comes कि आपका जो Employees Provident Fund Scheme है, Section 5 के अंदर, under this Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952, इसके अंदर आपका क्या, किस में आपका ये जो that this Employees Provident Fund Scheme applicable नहीं है. Specially, all the factories, in all the factories it is applicable, only in case of tea factories in Assam. उनका अलग ही स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ असम ने, असम का जो गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ असम, दे मेड अ डिफरेंट प्रोविजन फॉर द टी फैक्ट्रीज वर्कर्स. ओके, उन लोग का भी है, दे हैव आल्सो दिस पीएफ scheme, they have also, but they have a different scheme. Okay, they don't follow this Employees Provident Fund Scheme Section 5. ये जो 1952 का जो एक्ट है, इसके अंदर वो लोग फॉलो नहीं करते. That this one they don't follow. They follow a different provision based on the state government of Assam. Okay? If you will Yes, say ma'am.
कोई कॉटन फैक्ट्री बा सिल्क फैक्ट्री अगर है असम में, तो वेदर दोज फैक्ट्रीज दे फॉलो दिस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, यस they follow this scheme. Okay, only and only in case of tea factory of Assam. टी फैक्ट्री अगर आप देहरादून का बोलोगे, टी फैक्ट्री ऑफ अगर दार्जिलिंग का बोलोगे, तो उन लोग तो फॉलो करते हैं, यही स्कीम फॉलो करते हैं. दिस एक्ट ओनली दे फॉलो. बट आवर स्टेट ऑफ असम, दे डोंट फॉलो दिस स्कीम, दे फॉलो देयर ओन स्कीम. ओके, फाइन. Now this fund here, in case of this employees provident fund scheme, this fund shall be vested in and administered by central board constituted under section 5 of the act. जो ये fund है, ये कौन administer करता है, कौन invest करता है? Invest जो होता है ये fund किसके कौन authorize करता है, कौन ये बोलता है? That one is under सेक्शन 5 जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है, ओके, फाइन. एनी डाउट? No, ma'am. No. Please keep it in your mind, huh? This one, tea factory in the state of Assam. Here it is not applicable. This is very important. It generally comes. Okay? Don't forget this one. आपको कंफ्यूजन में लाने के लिए आपको बोल सकता है कोई भी दूसरा, जैसे सिल्क फैक्ट्री हो गया, बट टी फैक्ट्री ऑफ दार्जिलिंग हो गया, वहाँ पे बोल दिया कि वहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे अप्लाई होता है. इट इज एप्लीकेबल, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल. लेकिन इन केस ऑफ असम वी डोंट अप्लाई दिस वन. ओके, now what is called central board. यहाँ पे जो हम लोग को बोला गया है central board, आप लोग सुन रहे हो ना, central board. So what is central board? What are those members in central board? According to section 5A of the Provident Fund Scheme, okay, 1952, this central board has been established by central government. Who has established? Central government. Fine. And it consists of chairman and vice chairman appointed by central government. Okay. There is a chairman and there is a vice chairman. Who appoint them? They have been appointed by the central government, not by the state government. Okay. Then Central Provident Fund Commissioner as ex officio, means हम लोग का जो ये PF का जो Provident Fund Scheme का जो CEO, main CEO कौन है? That person is called the Central Provident Fund Commissioner. Okay? CEO है, कौन है? Central Provident Fund Commissioner. और मतलब सेंट्रल जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो उनको कहाँ से अपॉइंट किया जाता है? दैट पर्सन हैज ऑलरेडी एक्टेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. ओके, सो ही इज कॉल्ड एज ए एक्स ऑफिशियो. उन्होंने सेंट्रल बोर्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई मतलब एक सेक्रेटरी में वो एक ऑफिशियल पोस्ट में थे. दैट्स व्हाई he is called as ex officio. Okay, and the CEO is the Central Provident Fund Commissioner. Fine, is it clear? Then the members appointed by the central government. इनका जो members है वो भी कौन appoint करता है? Central government. The members are also appointed by the central government. Okay. Now, what are the contributions? What are the contributions under section 6?
The contributions of an employer. Employer क्या contribute करता है? What the contribution of the employer? 10% of basic wages plus DA plus retaining allowance payable to each of the employees. Now 10% of basic wages तो आपने समझ लिया. मैंने basic wages तो पहले ही explain कर दिया. I have already explained the basic wages, the basic salary. Okay. So जैसे आपका salary है 15,000, तो 15,000 का 10%, 15,000 का 10%. ठीक है. अगर आपका salary 25,000 है तो नहीं होगा, because according to this act it should be only 15,000, not more than 15,000. Okay. So if the salary is 15,000, then the 10% of your 15,000 will be given by the employer. Okay. Then retaining allowance. Retaining allowance क्या है आपको पता है? Retain करना मतलब जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड के समय क्या हुआ था, बहुत सारे एम्प्लॉयज छोड़ के चले जा रहे थे. दे वेयर मीन्स ड्यू टू दिस कोविड डिजीज मीन्स एक्चुअली पीपल वेयर just refusing, they don't want to work there in those companies. आपने देखा है बेंगलोर में, मुंबई में, सब जगह से क्या कर रहे, छोड़ छोड़ के आ जा रहे हैं, अपने अपने घर में चले जा रहे हैं. तो that time the employer has requested, employer ने किसको request किया? अपने employee को. Employer has requested to his employee that please you don't leave the job, please don't go from the job, please don't leave the job, I will give you more 50% of your basic wages. अगर ऐसा बोला कि मैं आपको 15 ऐसे जो आपका जो बेसिक वेजेस है उसका तो मैं 10% देता हूँ, तो 10% से हट के मैं आपको 50% दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड योर रिटेनिंग अलाउंस. ओके. मतलब एक एम्प्लॉय को रुकाने के लिए उसको और ज्यादा आपको अलाउंस देते हैं. ठीक है. तो उसको बोलते हैं रिटेनिंग अलाउंस. फाइन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. Okay, thank you. Next, the government may provide 12% contribution in case of establishment specially notified with effect from 22nd September 1997. अच्छा, ये जो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करते हैं, गवर्नमेंट जैसे हम लोग एम्प्लॉयर कितना दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया इन द ईयर ऑफ 1997, 22nd सितंबर से क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि आप थोड़ा परसेंटेज, एम्प्लॉयर को बोला थोड़ा बढ़ा दो. कितना? 10% से 12% तक बढ़ा दो. ठीक है. पहले 10% देता था. ठीक है. 97 से क्या हुआ, 22nd सितंबर 97 से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि एम्प्लॉयर को आप थोड़ा और ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को दो. कितना दो? 12%. 10% से 12% दे दो. मतलब 12% कंट्रीब्यूट करो. हु विल कंट्रीब्यूट द 12%? द एम्प्लॉयर. ओके. फाइन. नाउ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इक्वल कंट्रीब्यूशन टू बी पेबल बाय द एम्प्लॉय. मतलब एम्प्लॉयर ने अगर 10% कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉय भी 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. एम्प्लॉय भी 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे. लेकिन कभी कभी इन सम केसेस ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर ने 10% कंट्रीब्यूट किया बट 12% कंट्रीब्यूट किया, जो 97 से हुआ. जो एम्प्लॉय है वो सोचेगा कि नहीं मुझे और ज़्यादा चाहिए मुझे बाद में और काम करना है, तो आई नीड सम मोर मनी. तो एम्प्लॉय अपनी तरफ से 12% के ऊपर 15% जैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है. ठीक है. इज इट क्लियर? एम्प्लॉयज में मेक कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब्ड रेट. जैसे 10% है बट 12% है, उससे भी ज्यादा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं कर सकता है. इन केस ऑफ एम्प्लॉयर उसका एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड परसेंटेज है, वो 10% कर सकता है, नहीं तो 12%, बट नॉट मोर देन 12% अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. ओके. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम.
but the employee can contribute more than 12% if he wants. Okay, any doubt? Any doubt? No, ma'am. Okay, so this much I have completed. Now applicability of the scheme, ये जो है ये तो मैंने पढ़ा दिया. अच्छा, withdrawal from the fund. आप कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आप withdraw करना चाहते हैं, जो PF अमाउंट है उससे आप withdraw करना चाहते हैं, तो you can withdraw it. कब आप withdraw कर सकते हैं? For the purchase of a house, flat, गाड़ी मतलब घर खरीदने के लिए आप withdraw कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो for repayment of loans in special cases, withdrawal within 1 year before the retirement, withdrawal up to 75% of the balance, if not employed from 1 month or more, subject to approval of PF commissioner or any officer authorized by him. आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो इन केस ऑफ आप जैसे आपका घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ ठीक है. और नहीं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं आपके बेटी का, मतलब जैसे किसी का होता है ना बिफोर रिटायरमेंट ही हैज़ टू गिव मैरिज टू हिज डॉटर और सन, तो तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. तो लेकिन ऐसा भी है कुछ कुछ केसेस में कि आपको रीपे करना पड़ता है. यू कैन टेक लोन एज अ लोन फ्रॉम योर PF अकाउंट एंड यू हैव टू रीपे इट, ठीक है. आपको वो रीपेमेंट कर देना है, ठीक है. और इन केस ऑफ अगर ऐसा हुआ कि आपका डिसेबलमेंट हो गया, कुछ आपका पैर टूट गया, नहीं तो आपका आँख चला गया, कुछ हाथ टूट गया, तो उस समय आपको रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है. आप जो भी लिया लिया, लेकिन आपको रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है. बाप का कुछ फैमिली में बहुत बड़ा एक इलनेस हुआ, कुछ आप उसको यू कैन नॉट इग्नोर दैट वन, सो दैट टाइम यू नीड नॉट पे दैट वन, रीपेमेंट वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है. इज इट क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now employees pension scheme according to section 6A. Okay. आपका ये जो प्रोविडेंट फंड स्कीम था वो कितना था? सेक्शन 5A. ओके. और इसका कितना होगा? सेक्शन 6A, ठीक है. तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम हो गया. पेंशन स्कीम में क्या है आपका? फॉर प्रोवाइडिंग सुपर एनुएशन पेंशन. सुपर एनुएशन यू नो, ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट, ओके, दे प्रोवाइड द पेंशन. देन रिटायरिंग पेंशन और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन. आपका अगर डिसेबलमेंट हो गया, कभी भी आपको छोड़ना पड़ रहा है काम, आप नहीं कर सकेंगे, यू कैन नॉट वर्क नाउ फॉर योर डिसेबलमेंट, तो आपको उस समय आपको ये पेंशन स्कीम दिया जाएगा. नेक्स्ट, विडो और विडोअर्स पेंशन. जैसे आपका हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो आपके हस्बैंड का तो डेथ हो गया है, तो इवन इफ योर हस्बैंड डाइड, बट this pension scheme will be provided for his wife as a widow scheme. Okay, fine, ठीक है. Children pension or orphan pension payable to the beneficiaries of such employees. Suppose only father is there, father का death हो गया है, बा कुछ भी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम, इलनेस हो गया, दे नीड पेंशन, तो चिल्ड्रन पेंशन भी होता है. सो फॉर दैट टाइम द चिल्ड्रन विल गेट द पेंशन, ओके. बट वन थिंग, द चिल्ड्रन जिसको पेंशन मिलना है, ही और शी शुड बी, हाँ, नो, ही और शी शुड बी above 18 years of age. above 18 years of age मतलब मेजर होना पड़ेगा, because a minor child is not applicable for any pension, for any children pension under this scheme, okay. Only the major child, means above 18 years will be applicable, means will be applied to those children who are above 18 years of age, okay, this pension scheme, okay. Contribution, there is no contribution from the employee
ये इसमें पेंशन स्कीम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ना? ये एक पेंशन स्कीम एक जो बनता है, मतलब दैट इज द एम्प्लॉयर इज टू कंट्रीब्यूट 8.33% of the basic wages, dearness allowance, and retaining allowance if any of the concerned employees as may be specified in the pension scheme. Contribution is not payable when the employee crosses 58 years of age, since the scheme ceases or completion of 58 years. 58 years तक ही ये पेंशन स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है चलता है, उसके बाद नहीं. इसमें क्या होता है पेंशन स्कीम में, कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है? द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉय. देयर इज नो इक्वली अमाउंट, देयर इज नो शेयरिंग बेसिस कि आपको एम्प्लॉयर भी करेगा एम्प्लॉय भी करेगा, ऐसा नहीं है. ओनली फ्रॉम द एम्प्लॉयर. एंड हाउ मच? दैट इज 8.33%, 8.33%, okay, of your basic wages. Fine? Is it clear? Any doubt? This is very easy, you can easily do. Next class we will go for Employee State Insurance Act, okay? आप please questions answers follow up करो. You please go through the question answer. Are you going to give this time exam? Yes, ma'am. Means June or July? June, ma'am. June 11th. July. June 11th. June 11th is your exam. Ma'am, it's starting from 11th till 17th. Okay, fine. You got the timetable? Yes, ma'am. Your December, fine then, very nice. Yes, you have time. And the thing is that no, if you'll give in the month of December, you will get sufficient time. And if you'll continue the classes now, then revision will be then. You can revise the chapters nicely. Okay, here I am concluding the class today. Okay, thank you so much. Bye bye. And Thank if you, you ma'am. have, if you want this one PPT notes, please call me or give a WhatsApp message. Okay? Sure, ma'am. ठीक है. Thank you so much. Bye bye. Thank you, ma'am.